All right. Hi, Navendu. How are you doing? Hey Sanjay, I'm good. How are you? I'm good. Very good. So, finally ended up at NID, right? Yes. कैसा लग रहा है? कंफ्यूज्ड जैसे तैयारी के वक्त था अभी भी। क्योंकि अभी घर हूँ तो लाइक इवन लाइक पेरेंट्स आर लाइक कि है क्या ये कर क्या रहा है तू मम्मी बोलते हैं तू जाने से पहले एटलीस्ट मुझे कोर्स का नाम सिखा के जाना बाकी सब तो बाद की। तो इट्स लाइक दैट क्योंकि इट्स वेरी न्यू प्रिटी न्यू फॉर द पीपल हियर फॉर द पीपल अराउंड मी दो दे नो अबाउट एनआईडी बट द कोर्स इज अ बिट डिफरेंट एंड टू बी से कि थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, right. हाँ Quite a journey you've had, recalling the conversations that we've had before this. या Theater, अलग चल रहा है. There's a lot of things happening, right? So walk me through your यस journey to design. ओके सो व्हेन आई रिफ्लेक्टेड ऑन माय जर्नी कि डिजाइन कहाँ पे आया तो आई स्टार्टेड विद मतलब सब 12th तक तो जाते ही हैं 12th के बाद इज लाइक यू हैव दैट पाथ तो वन थिंग दैट स्टक मी ड्यूरिंग माय अर्ली डेज लाइक आई वांटेड टू बी अ पायलट बट ड्यू टू मेडिकल रीजंस आई कुडंट डू इट तो बट आई रियली लव्ड aircraft like jets बहुत like they are the one of the most beautiful machines that humans have created तो देन आई वेंट एंड डेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर हाइंडसाइट में मुझे जब मैंने रिफ्लेक्ट किया तो मुझे था कि मुझे बस उसका ना डिजाइन पसंद था मुझे और कुछ नहीं पसंद उसकी वो इतनी Right. खूबसूरत थी मशीन तो वो हाँ. मुझे डिजाइन पसंद था तो मैंने वो इसकी इंजीनियरिंग कर ली देन इंजीनियरिंग में लकीली आई वेंट टू वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एंड लकीली पुराना कॉलेज होता है तो एक अच्छी चीज होती है पुराने कॉलेज के दे हैव स्ट्रॉन्ग कल्चर तो वहां मुझे आर्ट साइड के बारे में पता लगा कि थिएटर क्या होता है क्योंकि 12th तक तो कुछ किया ही नहीं था और द प्लेस आई बिलोंग टू लाइक फॉर द ऑडियंस आई एम फ्रॉम हिमाचल तो वहाँ पे अभी इतना एक्सपोजर नहीं है रिगार्डिंग दिस कोकुलर एक्टिविटीज मच हम्म. बहुत ही सीधे साधे लोग हैं और बस पढ़ना ही जानते हैं हम लोग थिएटर किया वहाँ पे थिएटर में पता लगा कि जो मैं चीजें करता हूँ वो चैनलाइज की जा सकती है मतलब ऐसे ही नहीं है वो फिर देन आई डिड फ्यू जॉब्स और डिजाइन अभी भी मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट डिजाइन क्योंकि डिजाइन मैंने जब अब रिफ्लेक्ट करता हूँ तो डिजाइन इज इन एवरीथिंग इन दिस हम्म. लैपटॉप दिस इंटरेक्शन व्हाट वी हैव तो वो हर जगह है तो मुझे एटलीस्ट डिजाइन से ज्यादा अभी एनआईडी का मेरा जाने का वो मकसद था कि मैं ऐसे लोगों के अराउंड सराउंडेड रहना चाहता हूँ जो आर्ट या इसके रिलेटेड रहें ताकि मतलब जब आई वांट टू ड्वेल इन इनटू एनी ऑफ दीज फील्ड विच आई एम नॉट हम्म. श्योर अबाउट अभी तो मैं उसके आसपास रहूँ मोस्टली मुझे क्लैरिटी मिली अपनी पिछली फेलोशिप से तो आई डिड महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप विच वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें वी हैड दिस एकेडमिक पार्टनर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो हिमाचल स्टेट वाज अंडर आईएम लखनऊ तो वन ऑफ द कोर्सेज दैट वी डिड वाज डिजाइन थिंकिंग देन डेटा विजुअलाइजेशन एंड देन दिस इज कम्युनिकेशन विच थोड़ा मेरा ऐसा लगा मुझे कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू ड्वेल इन बिकॉज आई लाइक आई हैव डन थिएटर एंड थिएटर में मतलब जैसे इमेच्योर थिएटर भी करो तो उसमें वन ऑफ द की थिंग इज ऑब्जर्वेशन यू हम्म. ऑब्जर्व ह्यूमंस यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग तो वो ऑब्जर्वेशन इन जनरल थिएटर और थिएटर के टाइम से व्हेनेवर आई हैव डन तो वो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता दी कि ऐसा वो मतलब ट्राई टू ड्वेल इन की ऐसा क्यों है वो हम्म. क्यों है तो मैं इस चीज को भी पढ़ना चाहता था तो फेलोशिप के थ्रू भी मैंने कुछ कोर्सेज फिर वहां पे मेरी जो एक्सपीरियंसेस रहे देन आई वर्क विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें समर फेस्टिवल था तो मैंने हम्म. वहां पे कुछ कॉलेजेस के बच्चे थे फाइन आर्ट्स के उनके साथ वी डिड सम वी डिजाइन द होल अरीना ऑफ द फेस्टिवल एंड आई डिड सम ब्रांडिंग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो होते हैं स्वयं सहायता ग्रुप जो लेडीज बनाते हैं तो हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पूरी उनके जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग थी काफी पुअर थी वो ऐसे ही हम्म. कागज लपेट के प्रोडक्ट बेच देते थे तो लोकली लोगों को तो चलता था पर जो बाहर से आते हैं दैट वाज नॉट प्लीजिंग दैट मच तो हमने उस पे काम किया तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए rather देन एक होता है कि इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करो तो मैं कुछ ऐसी जगह में जाना चाहता था जहाँ पे ये सब सिखाया जाए या एटलीस्ट इस चीज का कुछ हो कि हाँ दिस इज द डायरेक्शन यू कैन टेक तो हम्म. ओवरऑल डिजाइन के ऐसे पॉइंट्स रहे ऐसे कोई बहुत बड़ा लाइफ के इवेंट नहीं रहा कि हाँ मुझे तो अब यही ही जाना है ऐसा Hmm. तो दिस Right. अ होलसम आंसर Right. So you've had like nudges, small nudges towards design all through your हाँ journey. Interesting. So your bachelor's was in aerospace इंजीनियरिंग engineering. And did you work after that? yes I did so during my college we have like a 6 month का internship so I Hmm. did my internship with Uber
ऊबर ऑपरेशंस टीम। उसी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ऊबर का एक बार आपको ऑपरेशंस में काम करने का मिल जाए, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन द ऑपरेशन फील्ड। हम्म। तो उसके बाद मैं प्लेसमेंट्स में तो नहीं बैठा था, बट आई हैड दिस ऑफर फ्रॉम ऊबर ईट्स जब उस वक्त लॉन्च ही हो रही थी। एंड लकीली द मैनेजर वाज फ्रॉम माय कॉलेज ओनली, मतलब आई वेंट टू वर्क विद ऊबर ईट्स। तो ऊबर ईट्स में आई वर्कड अराउंड 10-12 months, क्योंकि हम्म। हाँ उसके बाद ऊबर ईट्स वैसे इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद बिक भी गया जोमेटो को। तो हम्म। आई वाज हैंडलिंग उस वक्त सिटी ऑपरेशंस में हमारा जो सिटी लॉन्चेस होते हैं, क्वालिटी एंड एंगेजमेंट ऑफ कुरियर होते हैं, और उनको कैसे आप अलग अलग फनल्स, अलग अलग सप्लाई फनल्स बनाओगे ताकि द सप्लाई साइड ऑफ द होल बिजनेस रिमेन देयर। तो हम्म। आई वर्क देयर, मजा आया। फिर देन आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि तब आई वाज इनटू कि एक बार एमबीए के लिए कर देते हैं तैयारी। तो आई गॉट इनटू फ्यू इंटरव्यूज बट कुडंट कन्वर्ट। तो उसके बाद देन आफ्टर अ फ्यू मंथ आई हंटेड फॉर अ जॉब एंड गॉट माई सेल्फ इनटू एचआर एंड एडटेक कंपनी कॉल्ड इनसाइड आईआईएम। तो जिन्होंने भी एमबीए की तैयारी की होगी तो उनको इनसाइड आईआईएम के बारे में शायद पता हो। तो दे राइट ब्लॉग्स, दे मेक वीडियोस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट they work with B school companies to हम्म। employer branding में। और उसमें तो उसमें I was in the client relation and I also produced some videos, क्योंकि उनको ओके। पता था मेरे थिएटर के बैकग्राउंड के बारे में। ओके। तो उन्होंने भी फिर started few projects like CXOs and the CXO Central, जिसमें we used to bring CEOs of the CXOs position level people, and I used to produce those videos. Then post that I did my fellowship for 2 years. So that is how Interesting. exactly. Okay, all right. So you mentioned about theater and observations of, you observe people, their behaviors, etc., right? Hmm. So what kind of roles do you like? आई एम नॉट अ वेरी रोल स्पेसिफिक ह्यूमन, वैसे आई एम स्टोरी स्पेसिफिक ह्यूमन, कि स्टोरी कैसी है। रोल शायद चाहे मतलब छोटा भी होगा पर हम्म। इम्पैक्टफुल होना चाहिए मेरे ख्याल हम्म। से। मतलब व्हेन यू आर एट स्टेज, तो हम्म। आप आए हो और आप गए हो तो लगना चाहिए पता। मतलब हम्म। देर इज ऑल्सो दिस टू थिंग्स, या तो आप इतने नेचुरल हो उस रोल में कि लोगों हम्म। को लगे कि यार ये तो कब आया कब लाइक पता ही नहीं चला, और या तो आप इतने अच्छे हो कि हम्म। यू हैव दैट प्रेजेंस। राइट। क्योंकि मेरा इन जनरल लाइफ में आई हैव बीन इनटू अ थोड़ा कॉमिक एंड इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी, और इन सब में थोड़ा सा लाइक आई यूज्ड टू impersonate माय टीचर्स पहले, देन माय बैचमेट्स, देन तो थोड़ा सा लोगों ने मुझे, मतलब जैसे मैंने अपने आप को देखा है तो वो बहुत ऐसे कॉमिक रोल्स में, जैसे स्ट्रीट प्लेस करते थे जब हम, तो ज्यादातर कॉमिक रोल होता था। पर मेरा जो हाँ। पहला स्टेज प्ले था दैट वाज अ वेरी हम्म। मतलब सैड रोल दैट आई हैड प्लेड ऑफ अ फादर। हाँ मतलब बहुत पुराना प्ले था वो, पार्टीशन के टाइम का, जिसमें माय डॉटर ओ। गॉट रेप्ड एंड ऑल। तो वो ओ। वैसा एक बहुत, हाँ तो बड़ा हार्ड सा वो था। उसके बाद तो प्लेज में आई हैव डन वन कॉमेडी प्ले इन माय शिमला, मतलब जब मैं शिमला में फेलोशिप में था। तो यूजुअली तो मेरा, क्योंकि मैं किसी को ऑब्जर्व करता हूँ तो वो उसी के आस, और यूजुअली आप जब किसी को इम्पर्सनेट करते हो तो वो कॉमिक वे में ही ज्यादा लिया जाता है। सो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू इवन ऐसे इम्पर्सनेट करने के लिए कितना टाइम ऑब्जर्व करते हो? डिपेंड्स, मतलब अगर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा वो होंगे ना, रिपीट होंगे, या उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग होगा कि मुझे इंटरेस्टिंग लग गया, ठीक है, तो फिर तो शायद एक दो मीटिंग में एटलीस्ट कुछ कुछ तो चीजें पकड़ लूंगा। मतलब पूरा तो नहीं, पर कुछ ओके। कुछ चीजें पकड़ लूंगा। इट्स ऑल अबाउट कि वो कितना, जैसे गांव में भी कोई आसपास हो जैसे जहां मैं रहता हूँ, तो कुछ हाँ। अगर नया चीज है, कुछ नयापन है उसके उसमें, कि यार हम्म। ये तो कुछ अलग कर रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करके वैसा करके। कूल। सो फेलोशिप में काफी कुछ किया, लाइक यू डिड अ फ्यू थिंग्स दैट स्लाइटली डिजाइन वाली साइड में थोड़ा सा पुश इनटू दैट डायरेक्शन। सो हाउ डिड यू कम टू द कंक्लूजन कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद ये सब चीजें, ये स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट कहाँ से आया बीच में? इसमें एक बहुत ही मतलब लाइफ ऐसे, जिसको बोलते हैं ना कि जो चीज आप बहुत ऐसे शिद्दत से चाहते हो कोई नहीं मिलती, या लाइफ हैज इट ओन प्लान वगैरह। तो हम्म। देर इज दिस माई सम जगल बिटवीन मी एंड दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, शायद काफी लोगों ने सुना होगा। तो मैं उसके लिए 2000 आई थिंक 2020 से मैंने पहला इंटरव्यू, मतलब मैंने हर बार उस इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू दिया, तो आई हैव गिवन 3 इंटरव्यूज एंड ओह। माय वेट लिस्टेड स्टार्टेड। मैं पहले में आई वाज 11 फिर टॉप 3 4 में था, एंड व्हेन आई फाइनली कन्वर्टेड इट तो मैं उसको ज्वाइन ही नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं तब फेलोशिप में था और फेलोशिप के लास्ट लेग में था, एंड वी Ah. हैड दिस बॉन्ड साइन जिसमें इफ एनी टाइम यू लीव द फेलोशिप यू हैव टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट। तो आई कन्वर्टेड अ कोर्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप।
हम्म तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसके ऊपर थोड़ा निर्धारित है, एंड इट्स अ वेरी सॉर्ट आफ्टर, जैसे हम्म एमबीएस होते हैं वैसे था वो। और मैं अपनी फेलोशिप के बिल्कुल लास्ट उसमें था कि हमें 2-3 महीने बचे थे, देन होल ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड वर्क वो पूरा ही चला जाता वहां से। फिर देन दैट कोर्स का वो यूजुअली इट इज फेमस फॉर इट्स लो फीस, बट दैट वाज अ सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स, तो मुझे अराउंड लाइक 13-14 lakhs का पड़ता। देन हम्म वो स्टाइपेंड वापस करना अराउंड 4-5 lakhs का पड़ता, और ऊपर से आपने जो मेहनत की है इतने टाइम से, वो सर्टिफिकेशन वो सब चला जाता। तो हम्म फिर मुझे वो सीट लेट गो करनी पड़ी उस वक्त। और फिर उसके बाद जब मैं फेलोशिप के दौरान जो चीजें कर रहा था, जैसे अरीना डिजाइन करवाना, ब्रांडिंग के ऊपर काम करना, तो राइट मुझे ये एक क्वेश्चन आया कि मतलब मैं ऐसी कौन सी जगह जा सकता हूँ जहां हम्म पे मतलब क्रिएटिवनेस की स्कोप ज्यादा हो, rather हम्म देन इट्स जस्ट अ मुंडेन थिंग कि हाँ थोड़ा क्रिएटिव है बंदा तो चलेगा करके। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया था। मैंने एनआईडी के बारे में सुना था पहले भी, मतलब उससे हम्म ज्यादा पहले नहीं, उससे कुछ टाइम पहले, जब क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स के बच्चों से मिल रहा था। तो मैंने ऐसे एनआईडी सर्च करा, और एनआईडी सर्च करके मुझे कोर्सेज मिले, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट, क्योंकि मैं पहले से ही कॉलेज टाइम से भी आई वाज इनटू मतलब स्टूडेंट जैसे बॉडीज में को लीड करना या ऐसा कुछ जो भी था। हम्म और उसके बाद जो फेलोशिप और ये जॉब्स का रहा, आई हैड सम कनेक्शन विद मैनेजमेंट कि आई थिंक आई एम प्रिटी मतलब डिसेंट, मतलब उसको वो, हम्म तो मुझे कुछ बीच का ऐसे चाहिए था कि ऐसा रास्ता मिले जहाँ पे आई कैन वर्क विद मैनेजमेंट ऑल्सो एंड आई कैन वर्क क्रिएटिवली ऑल्सो। तो स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट वाज वन थिंग दैट आई, हम्म जो मुझे पढ़ा, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी ना कि वी फॉस्टर इनोवेशन, और ये सब हम्म के जो कीवर्ड्स थे जो मैं यूजुअली ढूंढ रहा होता था कि मतलब, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन थी 8-10 लाइंस की, ठीक है, पर वो मुझे लगा कि यार दिस इज व्हाट आई थिंक आई कैन dwell into. So then I went to LinkedIn, met few people, मतलब LinkedIn के थ्रू talk to them, क्योंकि I think SDM is a very open course as such। तो हम्म सबका एक अपना अपना एक्सपीरियंस था, जैसे एमबीए में आपको बहुत ऐसे स्ट्रीमलाइंड एक्सपीरियंस होता है, पर या एसडीएम वैसा नहीं था। सो देयर वर दीस टू कोर्सेज आई वाज इंटरेस्टेड इन, वन वाज इन एसडीएम, अनदर वाज इन फिल्म्स एंड वीडियो कम्युनिकेशन, दो बहुत अलग या तरीके के कोर्स। पर कम्युनिकेशन मेरी ऐसा लगता है मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा ठीक रहा है, इन दैट सेंस नॉट लाइक बोलचाल वाला कम्युनिकेशन, इन जनरल हम्म इफ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग थ्रू एनी ऑफ द मीडियम्स आई कैन, आई थिंक, आई गेस। तो मैंने दोनों में कंफ्यूज था उस वक्त, पर मैंने सोचा एक बार लेट मी गिव इट अ ट्राई, हम्म देखते हैं। और क्योंकि मेरे पास अब इतना तो मुझे लग गया था अपनी फेलोशिप में पता कि आई डोंट वांट टू गो फॉर अ रेगुलर एमबीए एमबीए काइंड ऑफ थिंग, तो मेरे हम्म पास कुछ ही ऑप्शंस थे। फिर मैंने कोर्स वो करने के बजाय मैंने इंस्टीट्यूट के साथ कोर्स वो करना शुरू कर दिए थे, कि इस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा ताकि आई वांट टू बी अराउंड दीज पीपल। जैसे टेस्ट था, टेस्ट में भी देयर इज लाइक पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, तो वो भी एक चीज थी। फिर एनआईडी में भी ऐसे ही लोग थे, तो हम्म हेंस एनआईडी केम इनटू पिक्चर। So during this whole thing, it's quite interesting how you figured out कि कौन सा course है that will work for you and a combination of what you really wanted to learn, हम्म right? So it's very thought out decision that you've made. And when you've made that decision, so now the thing was that you have never really thought about design, never यस। really understood कि हाँ ऐसा कुछ एक एग्जाम होता है. But now you're here, standing एकदम NID का एग्जाम है. हाँ। Like this is what I have to clear to हम्म get the course that I really want. So हम्म। how was that experience? Like how did you figure that whole preparation process and everything? वही फिर जब व्हेन आई शॉर्ट लिस्टेड कि हाँ ये कोर्स करना है, तो Hmm. उसके बाद वही पहली चीज गूगल सर्च कैसे करें, तैयारी। Right. और लकीली अनलकीली डिजाइन के ज्यादा भी इतने, अभी इतनी बड़ी मार्केट, और मैं तो चाहता Yeah. हूँ ना ही बने, क्योंकि इतना वो नहीं है कि आप किसी को सिखा सकते हो ज्यादा, मतलब आप उसको बेसिक्स ही समझा सकते हो। पर Hmm. कोरा में एक दो मैंने आंसर्स पढ़े, तो उसमें लिखा था कि यू कांट मतलब रियली प्रिपेयर फॉर इट, आपको मतलब आता है या तो नहीं आता है, या उनको जो चाहिए वैसा। लाइक आफ्टर गिविंग सो मेनी एंट्रेंस एग्जाम आई नो कि बेसिक्स तो है कुछ ना कुछ जिसपे एटलीस्ट आई नीड टू ब्रश अप, क्योंकि कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब अलग बैकग्राउंड, नॉन डिजाइन बैकग्राउंड, तो आई Hmm. हैड टू हैड समथिंग जिसको मैं पढ़ सकूं। Hmm. Hmm. तो Hmm. फिर उसके बाद आई सर्च्ड यूट्यूब में, व्हेन आई सॉ योर चैनल, देन देयर वाज Hmm. 2-3 अदर चैनल्स दैट आई Hmm. वेंट थ्रू। Hmm. तो उसके थ्रू मुझे और क्लैरिटी मिली कि हाँ मतलब देयर इज फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू डू। Hmm. वन वाज, जिससे मैं पहले से बहुत डरता था, ड्राइंग, क्योंकि
इंजीनियरिंग जिन जिन इंजीनियरिंग की उन्हें पता होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक जालिम सब्जेक्ट होता था। Yes. तो तो हम उनमें से जो शीट ऐसे अच्छी शीट नीचे रख के ऊपर अपनी शीट रख के Yeah. नीचे मोबाइल की टॉर्च चला के उसको Yeah, ट्रेस करते थे। yeah. तो आई I've वाज done दैट that. बैड। हाँ। Yeah. तो वो जिसको फीते से सही लकीर ना खींचनी आती हो, हम उन कैटेगरी में से थे। तो फिर Right. थोड़ा ऐसा हुआ। ऊपर से सबसे दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत थी द राइटिंग ऑफ आंसर्स। तो वो भी एक बहुत बड़ी वो था कि पोस्टर मेकिंग था, ये सब पोस्टर मतलब सिंस नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, लाइक आई हैव डिजाइन पोस्टर्स कैनवा एंड ऑल हैव मेड इट Mm-hmm. वेरी इजी, पर Mm-hmm. ड्राइंग इट इज वाज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो ये Mm. मुझे लग रहा था कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी साथ साथ। आई वाज जस्ट लुकिंग इट, फिर मैंने आपकी एक वीडियोस देखी, उसमें लिखा था कि हाउ वी कैन डवेल इनटू प्रिपरेशन। उसके बाद प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी मैंने अलग से बनाई थी। तो Mm-hmm. So what was it? What was that strategy? What did you focus on there? फॉर एसडीएम व्हाट आई डिड वाज, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे बी स्कूल्स में, तो दे हैड दिस सब्जेक्ट कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Yeah. तो आई टुक देयर केस स्टडीज की बुक्स होती हैं हर एक इंस्टीट्यूट की। तो आई जस्ट वेंट इनटू कि क्या केसेस पूछ, एंड देयर वाज दिस आई थिंक वन वीडियो, आई थिंक यू मतलब आप ही ने शूट की थी, जिसमें यू वर डिस्कसिंग द पेपर एंड ऑल। तो Mm-hmm. फिर मैंने कुछ पुराने पेपर्स उठाए, पुराने पेपर से मैंने समझा कि भाई ये क्या है पेपर, व्हाट दे आस्क। तो वो Mm-hmm. ऐसा कुछ बहुत रेगुलर पैटर्न तो नहीं था, पर ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत ज्यादा देवर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करना चाहते हो, क्योंकि वो Mm. पहले थॉट्स तो आ ही जाते हैं और वो मैक्सिमम Yeah. लोगों में कभी कभी कॉमन भी होते हैं। तो Mm. हाउ यू कैन थोड़ा अलग से सोच के, और जो पेन पॉइंट्स हैं, मतलब यूजली अगर कोई प्रॉब्लम पूछी जा रही है, तो जिस ऑडियंस के लिए आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनके में क्या क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, तो Mm. वो थोड़ा आपको पढ़ के या उन सब में वापस जाके आपको वो सोचना पड़ता है। तो Right. वो चीजें केस स्टडीज थी। देन आई आल्सो टुक अ वीक कोर्स, जिससे ड्राइंग एंड आई थिंक Mm. डिजाइनर एक स्टूडियो से ही मैंने वो ड्राइंग की बेसिक सीखे। तो मुझे ऐसे वो देख के तो लगा कि भाई ड्राइंग अगर करो। एक बहुत अच्छी चीज मुझे पता लगी, पहले मुझे लगता था कि ड्राइंग इज एन इनबिल्ट स्किल, कि जैसे Ah. वो आती ही है, पर वो नहीं है ऐसा। तो एनीवन Mm. हु थिंक्स लाइक दैट, तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई। Yeah. एक मतलब ऐसे बहुत अच्छा ड्राइंग वाला तो नहीं, पर एटलीस्ट एक डिसेंट की, हाँ कि तुम एक थोड़ा सा उसके आसपास वाला तो आर्टिस्ट हर कोई बन सकता है, यू कैन डेवलप दैट स्किल। Mm. तो वो थोड़ा मैंने ड्राइंग का थोड़ा किया, देन केस स्टडीज पढ़ी कुछ कुछ। और Mm. फिर साथ में एक जनरल नॉलेज के लिए आई हैड दिस बुक कॉल्ड मनोरमा, केयर बुक आती है। तो वो क्योंकि जब अब पेपर मैंने देखा तो देयर वाज आल्सो वेरी रीसेंट हैपनिंग्स जो पूछी गई Yeah. थी। Yeah. तो और कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने वो पढ़े, वो भी मुझे यूट्यूब में मिल गए थे। Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. और कुछ वो सब चीजें मैंने यूट्यूब से और यूजली ऑनलाइन Mm. कर ली थी मैक्सिमम। तो Right. वहां से दिस वाज माय प्रिपरेशन होलसम। So, जब प्रिपेयर कर रहे थे, like when you were preparing for the exam, did you actually figure out कि जैसे सोचा था प्रिपरेशन के टाइम पे और एक्चुअल एग्जाम में जाने के बाद, how was that? Did you actually find कि जो मैं सोच रहा था, like what you were thinking while you were preparing, वो exactly ऐसा ही था या फिर काफी different था? The question paper, the type of questions. हाँ, डिफरेंट तो था। मुझे सबसे पहला मुझे था कि ड्राइंग करवाएंगे, पर जैसे स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट में आई वाजंट एक्सपेक्टिंग ड्राइंग्स। उसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार वो तो लिखने का है ज्यादा, वो आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना होता है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन टू डिजाइन मैनेजमेंट का भी मतलब वी हैड दिस इन आवर फेलोशिप, तो मैंने वो सब पढ़ा हुआ था कि ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, मतलब वो सब तो आई थिंक आई विल मेक इट। पर वैसा था नहीं वहां पे, मतलब यू हैव टू मेक अ, आई थिंक एवरी क्वेश्चन हैड दिस थिंग कि आपको पोस्टर बनाना है या आपको इसको थोड़ा समझाना है बाय ड्राइंग इट एंड ऑल। तो वो एक बहुत बड़ा शौक था। देन फिल्म्स एंड वीडियो कम्युनिकेशन का जो पेपर था उसमें लिखने का बहुत ज्यादा था, उसमें ड्राइंग का काम था। वहां मेरे को ज्यादा उम्मीद थी कि वहां ड्राइंग करवाएंगे। So फिर what were मैंने वो questions that they asked you? तो पहले एनआईडी के पेपर के बारे में, देयर इज दिस ऑब्जेक्टिव एंड देन देयर इज दिस सब्जेक्टिव जो आपने कोर्स वाइज भरा होता है। Right, तो यू कैन right. ओनली फिल टू चॉइसेस। ऑब्जेक्टिव में दे हैव कट डाउन टू ओनली आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चन दे आस्क्ड। 20 क्वेश्चन Mm, वाज जनरल, कुछ लोगोस थे, एक टेस्ला का था, एंड
सम ऑफ द थिंग्स की प्रिंसिपल्स, जो डिजाइन प्रिंसिपल थे उनके ऊपर था। तो कुछ तो Right. मुझे आते थे और कुछ मैंने तुक्का मार दिया, क्योंकि नो नेगेटिव मार्क है तो Right. कभी कुछ खाली नहीं छोड़ना है गाइस। Yeah, जो भी है आसपास के बी या सी करके आ जाना एटलीस्ट। ठीक है। exactly. Yeah, yeah. द फर्स्ट ऑप्शनल वाज स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट, तो उसका पेपर आया। तो द फर्स्ट first question was around about a bicycle market, जिसमें they have said कि you are the owner of this company, you are going to launch a cycle for the kids from the age 2.5 3 to 7 के Hmm. बीच में, Hmm. and you have been a market leader in the other categories, but this is a newly category that you want to build into. Hmm. तो Hmm. द फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड कि व्हाट आर द 5 थिंग्स यू विल फोकस ऑन Hmm. बिल्डिंग दैट ब्रांड, मतलब वो कैसे आप उसको मतलब क्या क्या कंसीडर करोगे व्हाइल मेकिंग दैट साइकिल। द सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपको क्या लगता है व्हाट विल बी पुश बैक्स दैट यू गेट फ्रॉम दैट Hmm. मार्केट। तो ये सबका 5 5 पॉइंट्स लिखना था। एंड देन दे आस्क्ड कि पोस्टर बनाए हो, Hmm. मतलब हाँ, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो फीचर्स, सॉरी, फीचर्स बताने थे कि दैट यू विल ब्रिंग इन दिस साइकिल। तो और फिर उस पोस्टर में द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू क्रिएट दैट पोस्टर इंक्लूडिंग दोस फीचर्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन द आंसर ए। ए बी सी करके 3 पार्ट थे क्वेश्चन के, थर्ड पार्ट वाज मेकिंग द पोस्टर। Right. तो पोस्टर वैसा था, तो आई मेड, मतलब बेसिकली माय अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन वाज रियली कि यूजुअली इस उम्र में पेरेंट्स आर वेरी मच कंसिडरेबल टू देयर चिल्ड्रन। तो Hmm. कैसे Hmm. आप वो चीजें, हाउ यू कैन मेक इट मोर सेफ एंड मोर कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार, इफ दिस साइकिल इज अराउंड, लाइक आई डोंट हैव मच ऑफ द, मतलब कि वरी, मतलब इट्स अ गुड बिल्ट एंड ऑल। एंड पोस्टर में तो आई आई डोंट नो व्हाट आई डिड, बट somehow. Yeah. Then the second question was around आपके यहाँ पे विलेजेस में देयर इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी होता है। तो सीएचसी में दे हैड दिस केस कि यूजुअली पीपल व्हेन दे कम, तो यूजुअली तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, दे डोंट यूजुअली कम टू सीएचसी फॉर देयर इनिशियल डायग्नोस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू ड्रॉ सम पोस्टर टू टेल पीपल, टू एडुकेट पीपल कि you why you should come to CHC first, and जब आपको initially when you feel sick or whatever you feel, you should come to CHC ताकि we can take care of you Hmm. वक्त जाने से पहले। The first question इसमें पहले ही they have asked कि आप इसका पोस्टर बनाओ, how you will educate people and all. Then the second part of it was what are the reasons you think people are not coming there? Usually, I think I live in village, तो reasons जो मुझे personally पता थे, like one was that कि people are not comfortable usually CHCs में very, क्योंकि closed communities होती हैं and they don't Right. want to talk about their disease and all, Yeah. Yeah. क्योंकि फिर गांव अगर आपको हल्का सा बुखार है जैसे Hmm. और आप वहां चले जाओगे और वहां कुछ निकल आया तो द होल विलेज विल कम टू योर हाउस आस्किंग कि भाई क्या हुआ। Yeah. तो दिस Right. वाज माय कॉमन ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे यूजुअली क्यों नहीं जाते हैं rather than कहीं और जाने के। Mm-hmm. तो दीज आर फ्यू आंसर्स लाइक आई क्रिएटेड इट। तो इसके दो ही पार्ट थे। द थर्ड क्वेश्चन वाज अ पिक्चर, जहाँ पे जो वो व्हील होता है जिसमें आई थिंक ग्विनी बी पिग्स दौड़ते हैं। Mm-hmm. 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 तो हाँ, उसमें एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को दौड़ाया हुआ था विद अ सूटकेस। Yeah. बेसिकली दे हैव आस्क्ड कि व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज दिस। तो यूजुअली इट इज, मतलब मैंने उस वक्त वही लगाया था लाइक आइडिया कि दिस इज लाइक व्हेन अ कंपनी डोंट इनोवेट एंड दे फॉलो द सेम Mm. प्रोसेस दैट हैज बीन देयर सिंस लाइक व्हेन Right. दे हैव ओरिजिनेटेड एंड ऑल। तो Right. ये उस प्रोसेस, तो दे हैव आस्क्ड कि व्हाट इज दिस प्रोसेस एंड दे हैव आस्क्ड डू यू नो एनी कंपनी हु फॉलो दिस प्रोसेस। थर्ड पार्ट मुझे इतना याद नहीं, पर थर्ड पार्ट वाज अराउंड समथिंग ड्राइंग कि what कि how you will change that company's process and what will, मतलब what are the pain points you want to highlight and how you can change it। तो इसके भी 3 पार्ट थे। तो overall these were the 3 main questions that was there in strategic design management। काफी system level पे हैं questions actually, Yes। because you talk about a bicycle from Hmm। the start to the end, right from how you're Hmm। communicating that to the customers, end Customers। customers जो है. Then Hmm। community health, maybe there's a lot of considerations that you have to take. And the Yes। third question that you also again mentioned, it's again on the same lines. Quite Yes। interesting. But they've also asked you for visual representations of things, right? ऐसा Yes। नहीं Yes। strategies हाँ। ये छोड़ दिया. Yes। Yes। Interesting. And what happened in film and video communication? फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन पेपर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी टाइम बाद ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसे लिखना पसंद नहीं है, आई डोंट राइट,
पर ऐसे मुझे कब मिल जाए तो आई राइट, आई थिंक जब मुझे ऐसे फ्लो बन जाता है. फिल्म्स एंड वीडियो कम्युनिकेशन में दे आस्क्ड अबाउट द रीसेंट राइट्स दैट मणिपुर वाज गोइंग थ्रू. तो आई थिंक दैट इज व्हाई यू शुड रीड व्हाट इज गोइंग अराउंड. तो मणिपुर दे आस्क्ड कि व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द राइट इज ऑल अबाउट एंड राइट इट अबाउट इट कि क्या है वहां पे, व्हाई इट इज हैपनिंग एंड ऑल. Right. एंड इफ यू डोंट नो मतलब एक तो उसमें उन्होंने बोला था कि क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर टेक कि whether you should how you should resolve it and all. Hmm. Then luckily I knew the कि why the reasons कि वो क्यों हुआ था, तो I could write it. Then the next इसी का ही the second part of the question was there was the one picture of a Manipuri lady, मतलब if I can guess it around from her getup. तो Uh-huh. Manipuri lady थी who was holding a child. They wanted to build us a story around it with a center idea of a hope. Right. तो दैट आई डिड. तो उसमें मतलब कॉम्बिनेशन मेरा था कि आई डोंट यूज क्लीशे थिंग्स एंड ऑल की जैसे वो लेडी को देख के एक बच्चा पकड़ा तो यूजली पीपल मेक इट कि Hmm. देयर इज दिस मदर हु इज होल्डिंग हर चाइल्ड या Hmm. तो आई मेड हर द लीडर ऑफ द ट्राइब एंड शी इज होल्डिंग वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ सम फ्रॉम द विलेजेस. She has seen this पहले भी मतलब this rights and all because it has been there पहले भी and she's just holding it and hoping at like she had seen and उसको ये पता है कि ये भी सब खत्म हो जाएगा जैसे पहले हुआ था. Hmm. तो she's just holding that child and hoping that this will end soon and this child will again go to school or again have a great future. Then the Right. second question was very interesting. उसमें था कि you have to build a story. तो story में ऐसा था कि or you can imagine anyone else from in this situation is going and surprising his or her family, Yeah. but family member, sorry, a Hmm. particular person whom you want to surprise. And during that surprise, you come to know about a secret about that family member. Mm-hmm. So Mm-hmm. they wanted to develop a story around that. So I will recommend people to keep writing. और जो भी अगर कभी कभी क्या होता है आपको आइडियाज आते हैं, डोंट राइट इट, यू डोंट ड्वेल इट डाउन. तो Mm-hmm. मेरे साथ भी यही हुआ. मैं लिख तो रहा था उसे, फिर क्या हुआ मुझे बीच बीच में बहुत मैं फ्लिप कर रहा था कि अच्छा अब ये भी कर सकते हैं इसमें, ये भी कर सकते हैं. Right. तो वो एक चीज होती है कि आप फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाती है उससे. मैंने उसका मेन क्रक्स था वो बहुत लास्ट में जाके लिखा था कि और क्योंकि मुझे तभी आई रिसेंटली वॉच दैट वन मूवी कॉल्ड जॉयलैंड करके है. तो मुझे उसका कुछ एक कॉन्सेप्ट पसंद आया था तो आई यूज दैट इन दैट स्टोरी कि ये कर सकते Interesting. हैं मतलब. और देन नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट दैट कि यू हैव टू राइट अ कॉन्वर्सेशन कि हाउ डिड यू फाइंड दैट और हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट पर्सन Mm-hmm. जिसका आपको सीक्रेट पता लगा है. So you have to write that conversation in Hindi or English. That what they Mm-hmm. have mentioned. So Interesting. that was their dialogue writing was there. Yes. Third was around AI. They have asked about ki if AI. I just like very मतलब weakly remember this question. क्योंकि it has three parts, it's very short answers कि if AI will explain this situation, how they will explain this. So didn't do much मतलब that was not much interesting to me तो मुझे ऐसे याद भी नहीं. So that was these were the three questions Manipur writes and Yeah. writing a story, and third was around AI. So when first round का result आया इन सब का देखा तुमने, right? Yes. Then when you went for the studio test, Yes. how was that when you went for the studio test? So Gujarat was not new to me. So I was a Fauji kid. So I Yeah. had been to Gujarat. I lived there for 4.5 years and all. So Oh, ऐसे nice. हाँ. And I had this thing. I love train journeys and all. So I have recently Nice. booked a good. पर जाते जाते एक वो हो गया था कि I lost my earphones. तो एक so क्योंकि मुझे ऐसा होता कि पेपर से हाँ. पहले मूवीज वगैरह देख लो. It might help you to मतलब कहीं भी you never know. Mm-hmm. तो मैं मूवी देख रहा था एक द बाइसिकल थीव्स करके यूट्यूब पे. Uh-huh. तो वो फिर पर वो फिर दैट इज हाउ इफ यू वांट टू सेव मनी ऑन द ट्रेन्स देन यू हैव टू पे इट समवेयर एल्स. तो वो मेरे एयरफोन्स चले गए. तो देन आई वेंट देयर. तो उसके बाद माय फर्स्ट प्रोसेस दैट स्टार्टेड वाज फॉर फिल्म्स एंड वीडियो कम्युनिकेशन. So Uh-huh. films and video communication, it happened on 4th of March. So how the thing is, तो वहाँ पे you don't get interview dates as in particular date and time कि this is your date and time. That you will get there itself in the campus when you register for the mains. Mm-hmm. And we had this studio test on the day itself. So Mm-hmm. it was all around मतलब I think films and video communication and animation design had this test not
मतलब सेम डे रजिस्ट्रेशन। तो Uh-huh. इट वाज ऑल कूल, फर्स्ट टाइम इन एनआईडी। एंड तो वो भी एक अच्छा फीलिंग था कि अच्छा अगर हुआ तो यहाँ पे आना है करके। आई वाज That's जस्ट nice. ऑब्जर्विंग ऑल थिंग्स अराउंड कि क्या क्या है। इट्स अ क्यूट लिटिल कैंपस ऐसे। तो देन उसके बाद वी वेंट फॉर द टेस्ट। वी हैड द टेस्ट के बाद दे डाउन द लिस्ट कि किनका इंटरव्यू है। एंड देन इंटरव्यू में लाइक माय डे, मतलब मेरे को उसी दिन इंटरव्यू था अराउंड 5:30। आई वाज द सेकंड लास्ट पर्सन हु वाज इंटरव्यूड इन द Oh, that's a tough पैनल। spot to be in. वेरी टफ। Yeah, that's a tough spot to be in. लास्ट वाला फिर भी होता है कि चलो लास्ट है, पूछ ही लेते हैं दिन हाँ. अच्छा जाएगा। पर सेकंड लास्ट होता है कि भाई इसके बाद एक और है, बस उसके बाद तो Yeah, I know, right? And test में, but हाँ। but studio test में क्या questions थे? सो स्टूडियो टेस्ट वाज ऑफ 3 आवर्स। सो Hmm. 3 आवर्स में तीन अलग सवाल। पर तीनों सवाल का ऐसा नहीं, एक घंटे एक सवाल, दूसरे घंटे पे दूसरा सवाल, ऐसा नहीं है। सो देर इज अ Mm-hmm. स्पेसिफिक टाइम। वन Mm-hmm. पेपर माइट बी ऑफ 45 मिनट्स, अनदर इज ऑफ 75 मिनट्स, और उसके बाद दे हैव डिवाइडेड दैट टाइम अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द Mm-hmm. पेपर। पर एक Mm-hmm. ही एक पेपर आप उसी वक्त दोगे तो आपका दैट इज फॉर पर्टिकुलर टाइम, उसी वक्त होता है और उसी वक्त वो दे विल टेक इट बैक, यू वोंट एबल टू रीडू इट या ऐसा कुछ। Mm-hmm. So the studio test may basically it's more descriptive paper what I have observed, Mm-hmm. and more into the subject. Like for the films and video communication, the first question was they played a short film called Mm-hmm. Prisms of Perceptions. तो वो दोनों दो तीन बार चलाई मूवी, एंड उसके बाद वो एक ही बार चली स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में, एंड उसके बाद दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चंस, 3-4 questions. One was, is do you think the title justify the movie? Then other was, I remember the third part of this question was, apart from the train, like in the prism of perception they had this train जिसकी development की journey थी through every prism, and Mm. they asked ki rather than that train, what would the next object you would have picked up for that. तो वो था one question. I think we got like 45-60 minutes for that question. Another was वो थोड़ा और लंबा था, that is was 75 minutes. उसमें they have given the map of NID, and map देने के बाद they have asked few questions around it कि if you want to shoot a short film, which will be the spots, तो आपको spots mark करने थे उसमें, and then they have to justify why you picked those particular shots. Mm. Then using those shots make a छोटू सा story कि ये क्यों है। ऑल्सो द मैप में दे आस्क कि इसको पर्सोनिफाई करो कैंपस को एक ह्यूमन स्केच के साथ। तो मेरी तो ड्राइंग बहुत गंदी थी तो मैंने उसमें अब इसको ऑब्जर्वेशन बोलो बेवकूफी बोलो वो तो वहीं के टीचर्स बताएंगे जिनने पेपर चेक किया। पर देर इज दिस बिल्डिंग जिसका ना शक्ल वाज लुकिंग लाइक अ ह्यूमन, तो मैंने वो Okay. उठाया और मैंने उसको ना यूज किया, एंड आई यूज दैट मैप ओनली मेकिंग अ ह्यूमन, लाइक क्योंकि कैंपस के बिल्कुल ऊपर साबरमती है, तो साबरमती आई यूज्ड एज अ हेयर, एंड वो कैंपस का वो करके, एंड देन द चेस्ट, Right. एंड आई जस्ट एंड Right. उसके करेक्टर के बारे में लिखना था कि आपने करेक्टर क्या बनाया और व्हाई डू यू हैव चूज। तो मैंने उसको एज अ कैंपस का वो बता दिया था कि दिस इज द बिल्डिंग was there since the NID was established, and it has seen all the tremendous development around the city. So this was it. Then other was you have to choose, pick one. That was a short question, around 25-30 minutes का question था। उसमें they have asked कि choose one state that you want to build ad for tourism and all, and why you have chosen that particular state. Pick one tagline for that state कि आप क्या लिखोगे। Then what are the spots and what are the things that you will pick for that state to cover. That was a short question, and since like I was from Himachal, तो मैंने तो I chose Himachal. It was an easy Nice. one. This was how the three question went. Then for the strategic design management, I had to go to Gandhinagar. Right. So Gandhinagar mein the registration was on 11th, but the studio test was on 12th. Yes, one thing I would suggest everyone to write and write so that they can build the speed, because these are very Mm. lengthy question, and if you are writing something and मतलब वहाँ बड़ा वो हो जाता है कि आप attempt पूरे क्वेश्चन करो या ना करो एंड ऑल। Mm. So one thing is building the speed, what I would suggest to every student, every aspirant who is there. Then studio test में of strategic design management. This is not in the order, but I will start with the Mm. third question. So the third question was of material building. तो उन्होंने एक material का packet दिया था, and they have given one sheet. तो sheet में there is a different angle of an recliner chair जो लकड़ी वाली होती है।
आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू से, अभी भी नहीं आ रहा है मुझे। It's मैं अपने the दोस्तों के साथ, rocking chair. हाँ, रॉकिंग चेयर, The यस। rocking chair, yeah. हमारे यहाँ है नहीं तो जो चीजें हैं, Yeah. तो कभी, हाँ, तो रॉकिंग चेयर के उन्होंने अलग अलग एंगल्स दिए थे, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट कि क्या Hmm. है उसमें, देयर वाज दिस ब्लैक बैंड एंड ऑल। Right. तो उसका आपको देन, एक रॉकिंग चेयर के आपको 6 एंगल्स, 6 फ्रेम्स दिए थे उस कागज में, एंड दे हैव गिवन अ पैकेट जिसमें मटेरियल था फेविकोल, जूट का रस्सी, देन वाइट थ्रेड, स्टील वायर, and one stickers. What the first question was to draw that chair using, making it like you are using it, Mm-hmm. someone is using it. So one was that, and the another question was to make that in that material, those materials. So yeah, material handling is one thing, and during my preparation also, पर मैंने से wire तो नहीं use की थी, पर अलग अलग चीजें like clay था, clay I have used, Hmm. then few things around my house that I have used. तो material handling थोड़ा देख लीजिएगा जो जो भी Hmm. preparation कर रहा है. Then Right. so this was the third question. The second question was around Olympics. The India is Olympics. bidding for hosting 2036 ka Hmm. Olympics, Right. and apart from hosting it and preparing for it, there are many things that a country had to, take into consideration. So what do you think? What are the consideration that India should take before hosting it? Right, Hmm. like jot down it 5 points around it. And the second question was around what do you think will be the perfect symbol or mascot kind of thing that can represent India's Olympics. Then they asked to draw it in the Hmm. next page, and then they asked to explain what are the elements that we have used. So this was for Olympics. Hmm. The second question. And the first question was around, so they have given this a case study kind of thing, जिसमें Mm-hmm. they have published an article. I think आप एक article था, उसका हमने एक वो दिया था. So it was Okay. around talking about how dog meanings, basically how people are, many people are threatened by dogs, and what are they, there were some data points ki these are the people who are bitten by the dog Hmm. every minute, and how many people die out of Right. rabies. Right. And in the another paragraph they have given the counter of it ki even people are ruining dogs lives, they are killing them, Hmm. they are threatening them and all. And last was around the organization that we're working with, who are trying to solve this problem. Then the Hmm. first question around that was using all the data that they have given, draw a data visualization chart kind of thing to Oh, educate okay. people around. The second question was they have given 4 boxes, and they wanted to draw some comic and interactive kind of thing. Ki a mom is making her child understand how they can be aware of dogs, how she can make him understand about that story that you have just read about those facts. So you have to use those 4 boxes, drawing them and writing in a dialogue box whatever suits you. Then the third question was the solution, like what, from your perspective, what is the solution for it. So yeah, this was overall whole of the paper thing that happened. Quite interdisciplinary approach, I would say, for Yes. all of these questions, because they're not only talking about just the strategies and everything, they're talking about mascot अभी वो brand identity में आ जाता है, हाँ right? हाँ हाँ, Brand yes, identity से लेके they are talking about case studies and data visualization as well. So yes. quite interesting. And also Olympics. Also, this is at a strategic level. What needs to be considered? And talking about your film and video communication, you have a short film that they showed. Hmm. Then you have location scouting. Then how to use those locations into your own story, right? You're in the map wala jo In the map, exercise yes, hai, yes, right? yes, yes. Quite interesting. That was, I think, pretty straightforward, the film and video wala jo assignment hai. But your SDM was quite interdisciplinary, to be Quite, honest. yes, yes. It was like then at that moment when I gave the mains, I got ki हाँ, मतलब this is where I really want to be, like, Uh, that you कि ऐसे question, because I have worked in this mascot वाला thing during my, if in my fellowship. fellowship, Yeah. so that got some validation, या हाँ मतलब कुछ तो Mm. सही होगा यहाँ जाके वैसा करके. I remember that portfolio. So tell me a little bit about last two questions to you. The second last one is when you went for the interviews. If you can summarize the interviews, both the interviews, and tell Hmm. me what they asked you in the interview and how you answered them. So my first interview was film and video communication one. So it was pretty straight interview. They asked, they matlab,
I gave them my portfolio. They looked, matlab, didn't seem that, the portfolio thing was a bit hype for me. Ki, like, I am a person who have a like one pager CV. So I have to make that whole portfolio thing. They looked around, they asked why you have filled films and video communication. Then one of the ma'am told me, like, you have filled strategic design management also. So what if you get both of them? I don't know what came to my mind. Said like, ma'am, you know the preference, so I'll go preference wise. With So strategic, you'll yes, go. with strategic. So yeah, like उसके बाद I rethought it कि काश I would have said कि अगर मैम this will be dream come true kind of thing. But yeah, that was that momentary kind of thing. But yeah, उसके बाद इंटरव्यू वेंट वेरी चिल कि उनको पता लग गया था कि ये तो मन बना के ही आया स्ट्रेटजी में जाने का. So they asked, like, I have during my college days I did this few videos जो आफ्टर फिल्म्स बनती थी, ओरिएंटेशन, एंड वी यूज्ड टू क्रिएट. तो आई showed them few things. Then they asked कि if you're writing something, what is that about, कि क्या लिख रहे हो आजकल. तो ऐसा I was not writing, but I told them कि the last question that NID prelims had, I worked on that story a bit of it. Then last question was about the plays that I did. So I told them about the plays and all. And then yeah, that was it. It was not big, like I think it was a 10-15 minutes chat that we had. So it was overall around what you did in the films and video communication, in the video communication that I usually used to write. I was not an at all an editor or kind of thing, but that was how the things were. That was pretty straightforward. Then the another was strategic design management. Then they Right. started it with the introduction part, briefly introduce yourself. Then they asked about, you have a quite a journey doing multiple things, then coming here. Then one of the professor was stuck कि तुम्हें aerospace नहीं छोड़नी चाहिए थी, you were passionate about it and all. So I wanted to tell, one of my seniors told me during my aerospace days कि नवेंदु उड़ता हुआ हवाई जहाज सबको पसंद होता है. तो I want to reiterate कि सर उड़ता हुआ जहाज सबको पसंद होता था, मुझे पसंद था. मुझे अच्छा. मैं गया मैं गया, मुझे पसंद नहीं आया. पर मैंने बोला नहीं. मैंने उनको, like, I told him, like, passion is a lifelong answer that I'm still searching for it. Then they asked about morely about ki rural development. Why don't you want to go further into rural development, since my fellowship is around that, where I'm developing rural strategies and all. Then another question was, what is a common key characteristics between an actor and a designer? What do you think are those? So around that it happened. उसी के around था. I had this 4 years का work experience. So mostly my questions was around my work experience and around that. Nothing in general कि design क्यों है ये है. They didn't ask much about it. So now that you've actually went on to explain your whole journey and especially the NID का exam बहुत ही detail में explain किया है how and what happened and what type of questions they'd given you. So when you were doing, going through all of these exam ke phases, what do you think helped you to clear the exam and in a way that the aspirants can learn from your journey? So one thing that worked for me, I think, was having that creative confidence kind of thing. Ki yes, at least what I'll write will be a bit unique, different, but relevant. Creativity इतनी भी बाहर नहीं होनी चाहिए कि that वो relevance ही खत्म करते हैं उस problem Right, की और उसकी. right. So one was creative confidence. Another was, like, I didn't have any backup also. So I won't suggest it, but yeah, because it's Yeah, my journey and it's my take. Like, everyone is in their own life journey, और सब अपने अपने तरीके से उसको देख सकते हैं. तो one was like I didn't have much backup. I was very much focused कि NID ही जाना है. Though I had few backup courses that I wanted to do, since in the long term I want to work in the entertainment and creative industry. right. Another one thing was, this will help in your interviews, is reflecting on your choices, like why you chose. There is no wrong and bad, wrong or correct choice, unless you can justify it, like why you did it at the first place. Right. So three things, like reflecting is one of the things. And for preparation, just read as much you can, read around the things, read about what is there new in the happening in the design field. And there are few books that you can read. There's like designing everything. Yeah, design of So everyday things. Yes. yes, so one is that I started reading, and there's also some courses. Now the design thinking is a very
new and very hyped up thing, so you can always go through what is the design thinking, and Hmm. so you can get a gist of it. These are the few things I think one should keep in. So I've noticed something that you have, the way you absorb information is through observations, reading, like you read books, and also through a lot of experiences. You learn from a lot of things from your experiences. Yes, like one thing I did was I had from my films and video communication to strategic design management, I had a week or so between the Mm. papers, Mm. and I went for this heritage walk in Ahmedabad. Nice. So I think, and there we saw some Stepwells. wall paintings of olden times, like when people used to. And Mm. उसमें I watched a lady, a cow, a baby, and all. And Mm. that was the most simplest drawing that one can, and anyone can draw that. It was just two triangles opposite to each other. That was the body of the lady with a circle and a bun of it. That will tell that she's a lady. And if you Right. remove the bun, she's a man. I mean, that lady has turned into a man character. So I used that cartoon वाला thing in my strategic design management का Olympics वाला paper, क्योंकि Very I nice. Very nice. मुझे इतना था कि ये कहीं पे भी अगर इंसान जैसी कोई चीज बनाने को आए तो मैं यही बनाऊंगा तो ये Very बनेगा nice. यही. So yeah, I just look out कि क्या we can use it in daily life, and मतलब Mm. how we can you मतलब simple thing सब आसपास ही हो सकता है आपके, कभी कभी मतलब Right. जरूरी नहीं है you have to have that hard path and hard things. Of course. So I think very well summarized. So, to the listeners, I think this episode is quite different from the previous ones that we've done because it's varied, like the transition that you've had. It's quite varied. And also, I'm just looking at the notes right now that I've made. Theater experience, the fellowship, the small nudges to design, towards design, and your preparation for NID all throughout was never exam की तैयारी कर रहे हैं बैठ के. Like it's हाँ never like that. It's हाँ. experience, it's you're exploring, you're reading. I mean, you had that general knowledge का वो book भी लेके है रखा हुआ है, but you're preparing that way also. But then I feel that you all throughout you've been learning from your experiences. But I think design का paper is all about what you have learned in the sense Mm, कि क्योंकि it's not about classroom learning and all. I think yeah, it might help some people, पर yeah, मेरा तरीका ये था कि वो अगर बंद कमरे में ही करना होता तो मैं मेरे पास और भी पेपर्स थे करने को. आई वुड हैव गिवन कैट exactly. अगेन एंड ऑल. Yeah, तो पर ये yeah. पेपर ही वैसा था कि क्योंकि व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, तो Mm, ऑब्जर्व एनीथिंग दैट इज देयर, और आ right. गया तो ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक्सपीरियंस हो गया. Absolutely. Absolutely. So exploration is very important, guys. I think first of all, the clarity that you've had that this is the course, the conclusion that you reached, कि ये दो courses हैं जो मुझे करना है, that itself is a very big step. So a lot of people are actually kind of lost when they talk about the domains selection. दो choice मिलता है तो कौन सा लेना है मुझे. So very important. And also the thing that you mentioned about reflecting on your choices, why you did something, why you made that decision. So that eventually will lead you to that clarity as to why and what you want to do in, in your masters and आगे जाते हुए भी. Because you also mentioned that sometime in the future, जाना तो अपना वो, what do you say, towards that film and video side, थोड़ा inclination तो वो रहेगा ही, right, for you. हाँ हाँ Right? हाँ. It's good to have and quite an interesting journey, Navendu. And thanks for sharing that. I'm glad we could discuss your journey today here. To the people like Sanjay have really helped me a lot during my preparation times also, and post my prelims, क्योंकि since now like I say like reflecting on choices, but since I was not very much new to the field and Hmm. Sanjay has huge experience in this field, this is good to have that one-on-one conversation. So I really want to thank you, Sanjay, for taking out time. जो भी cloudy confusion clouds थे वो थोड़े से दूर करने के लिए. It's a pleasure. And I'm glad we could connect those times and, it just worked out in your favor. I'm Yes, happy it did. And all the best as you go to NID. thank बहुत कुछ you. explore करने के लिए है वहाँ पे. जाओ, I think Yes. it'll be a good playground for you. Yes, yes. One thing Sanjay have said and I remember while making decision was कि Yeah, अंदर जाके बहुत कुछ पता लगेगा. And this right. reminded me of my college days, जो मैं गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने, और मुझे ऐसा लगा था बस मुझे जाते ही वो पकड़ा देंगे कि हवाई जहाज बना दो, और वहां पता लगा इंजीनियरिंग बहुत अलग चीज है.
वो तुम बहुत कुछ और Yeah, भी कर सकते हो। yeah, मतलब yeah. जैसे आई डिड ड्रामेटिक्स एंड वर्क Mm, विद द स्टूडेंट टीम्स, फेस्ट वगैरह और इन सब में। mm, तो ऐसे पुराने इंस्टीट्यूट्स और में यही एक अच्छी चीज होती है कि वहाँ पे लोग अलग अलग जगहों में गए होते हैं और अलग mm, अलग वहाँ पे सिस्टम्स थोड़े बैठे होते हैं। तो यू mm. कैन गो और वहाँ पे जाके क्या, आई डोंट नो व्हाट आई विल बिकम आफ्टर डूइंग एसडीएम, सो लेट्स Yeah. सी, लेट होप लाइक इट गोज टू द जर्नी व्हिच विल लीड टू माय लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग का कुछ भी मिले। अरे बिल्कुल होगा एकदम, बिल्कुल होगा नविंदु. देखते हैं। It's lovely having you on the podcast, Navindu. Thank you so much. थैंक यू संजय।